Welcome to my classes. Today we will study exercise 1.5. जैसा कि हम सब जानते हैं अब तक हम एक्सरसाइज 1.4 तक के कर चुके हैं सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अब हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आई विल एबल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। आज हमारा नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें क्लासीफाई करना है जो हमें ये नंबर गिवन है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस रूट 5 ऐसे भी जाए नो 2 माइनस रूट 5। रूट 5 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 2.2360। when we minus 2 minus 2.2360 we get minus 0.2360. अब now problem is this arise, how can we calculate root 5? Now it's really simple. Here for rough work I will show calculation of root 5. 2 2 ज़ा 4, 5 में से हमारा 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी गेट 1 पॉइंट here 0.000 we get both zeros we can write here and this from this get we 4. Now 2 as you know that 2 प्लस करेंगे हम यहाँ पे and we get 84 minus 600. Now we get 16 and then both zeros we here, so we calculate from this way and now we get our answer 600 minus 1320, then we get minus 27100. So from this way we can calculate and we get our answer in this way. We get helpful to solve. Now here we have question number 2. Question number 2 is 3 plus root 23 minus root 23. Now we solve the bracket root 3 minus root 23. Here minus and plus it will be cancelled. Now we get 3, which is a rational number. As we know all 3 is a rational number. Now which is a rational number? We all know that 3 is our rational number, so we can write this is a rational number because root 3 plus and minus will be cancelled with each other. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। here we have the third question. So क्वेश्चन है 2 root 7 upon 7 root 7. Now 2 root 7 7 root 7 root 7 we cancel. Now we get 2 upon 7. When we solve the 2 upon 7 we get 2.085, which is a rational number.
we have question number 4. Question number 4 is 1 upon में root 2. One upon में root 2. 1 not is equals to 0 is a rational number and as well no root 2 is an irrational number so 1 upon में root 2 is an irrational. 1 upon में root 2 is an irrational number. तो हमने ये कंक्लूजन कैसे निकाला कि 1 upon में root 2 है वो हमारा रैशनल नंबर है. इसका रीज़न इज देयर. The quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. The quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. So this is our calculation. Now we have question number 5. To pi. We all know 2 is our rational number and pi is our irrational number. ऐसे कि हम सब जानते हैं जब 2 है हमारा रैशनल नंबर होता है एंड पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है. हमारे पास क्या 2 is a rational number pi is a irrational number. The product of a non-zero with an irrational number is irrational. जब हम किसी इरेशनल नंबर से प्रोडक्ट करेंगे तो वो नंबर हमारा ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर हो जाएगा. देन 2 पाई इज इरेशनल नंबर. Here we know 2 pi is our irrational number because where 2 is our rational number and pi is our irrational number. When we product non-zero with irrational number, it automatically becomes an irrational number. So that conclusion is this: 2 pi is our irrational number. Here is the solution of our 2 pi. We can say is irrational number. Now we have question number 2. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. हमें सिंप्लीफाई करना है इसको सॉल्व में. 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 इनको हमें मल्टीप्लाई करना है. नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय द होल ऑल्सो
2 plus root 2. Now plus root 3, 2 plus root 2, 3 2 जा 6, 3 को मल्टीप्लाई करें रूट 2 से. नाउ वी गेट 3 रूट 2, 2 रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 रूट 3, रूट 2 एंड रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट रूट 6, 6 प्लस रूट 3 प्लस 2, root 3 plus 2, 2 root 3 plus root 6. Now this is answer. Now here we have question number second. Second question is root 3 plus root 3 and 3 minus root 3. We can see this is an identical. Here we can apply identity a plus b, a minus b, a square minus b square. Here we apply this identity because a is there 3 and b root 3, where a square we write 3 square, b root 3 square. 3 minus 3 square it means 9, रूट 3 का स्क्वायर की हमारा आ गया 3, 9 minus 3 we get 6. Here is the solution. Now question number second. We shall अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया. अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें. थर्ड क्वेश्चन नंबर इज रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर. नाउ वी हियर इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ हियर वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी. a इज इक्वल्स टू रूट 5, b इज इक्वल्स टू रूट 2, ए स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी हमारा रूट 2 का स्क्वायर. अब 2 वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू में 5 से रूट 5 से रिप्लेस कर देंगे. वैल्यू ऑफ बी रिप्लेस करेंगे हम रूट 2 से. रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2. नाउ 2 5 2 जा 10. हियर वी गेट 7 प्लस 2 रूट 10. दिस इज द solution. Now question number third. Now अब हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व किया. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ. फोर्थ इज रूट 5 माइनस रूट 2. नेक्स्ट रूट 5 प्लस रूट 2. and same we know there is an identity of रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी अपनी अप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी, a माइनस बी. नाउ वी गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो now we get for this identity we get रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2. 5 minus 2 it means 3 answer. I hope it will be clear for all. Now we have question number third. Now here we have question number third. I think it is visible for all. Recall n is defined as the ratio of the circumference. जो n है वो डिफाइन कर रहा है रेशियो ऑफ circumference of the circle to its diameter से d. circumference को हम c कहेंगे और diameter को हम d. That is pi is equals to में c upon में d. This seems to contradict the fact
that pi is irrational number, will you resolve? अब हम बोलते हैं जो पाई है वो हमारा इरेशनल नंबर है, तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं? तो अगर ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन इज हेयर, नो कंक्लूजन इज देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो contradiction when we measure a length, when we measure a length with scale or any instrument, we only obtain an exact value. जब भी हम किसी सर्कल की लेंथ वगैरह मेज़र करते हैं तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी ओनली ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू। हम हमेशा क्या मेज़र करते हैं? अप्रॉक्सीमेट rational value. We only measure an approximate rational value. We never obtain an exact value. हम कभी भी we never obtain an exact value. हम कभी भी उसके obtain नहीं करते हैं. For this reason we may realize that either C or D is irrational, therefore C or D fraction irrational, hence pi is irrational. We indicate, for this reason we may realize that either C or D is irrational, therefore the C D fraction is irrational, hence pi is irrational. We can say that pi is our irrational number. Now जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया अगर हमारा n को डिफाइन कर रहे हैं हम इस रेशो में, तो हम सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उसको बोलेंगे हम c, और सर्कम का जो हमारा डायमीटर होगा उसको बोलेंगे d. तो पाई इक्वल्स टू में c अपॉन में d. तो देयर इज़ नो कॉन्ट्राडिक्शंस व्हेन मेजर आर लेंथ, क्योंकि हम क्या लेते हैं? अप्रॉक्सीमेट लेते हैं. किसी से भी मेजर करते हैं, हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होंगे. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. हमें रिप्रेजेंट करना है इसको नंबर लाइन पे. हमें इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे √9/3. तो देन फर्स्टली वी कंस्ट्रक्ट, देन वी राइट. पहले हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इसको, फिर हम इसके कंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे. वी ऑल नो दैट कंस्ट्रक्शंस वाले क्वेश्चंस में हमें हमेशा इसकी स्टेटमेंट लिखना नेसेसरी होता है. तो फर्स्टली वी कंस्ट्रक्ट दिस 9.3, देन वी राइट द कंस्ट्रक्शन. ओके,
Now we construct 9 upon में 3. For this we need a pencil, compass, and as we all know that the most necessary thing is a scale. We all need for the scale for this. So let's get started. अब हम इसको बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसको नंबर लाइन पे 9 अपॉन में 3. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कंपास एंड पेंसिल नेम इज ऑलवेज इक्वल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अन लाइन सेगमेंट 9.3. हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे 9.3. ओके, सबको पता है जैसे कि हम मेज़र कहाँ से करते हैं, इस 0 से. एंड नाउ वी गेट 9 1 2 3. तो हियर इज अवर 9.3. लाइन सेगमेंट इज 9.3. इसको हम क्या नाम दे देंगे अब हम इस लाइन सेगमेंट को नाम दे देंगे ओ बी. कितना है हमारा 9.3. कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. ये हमारा नंबर लाइन है, हमने लाइन सेगमेंट दे दिया. और ये हमारा ओ है एंड ये हमारा पॉइंट है बी. हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाए ओ एंड बी. अब हम क्या करेंगे, टेक बी सी ऑफ यूनिट 1. अब हम बी सी लेंगे, एक यूनिट 1 यानी यूनिट 1. नाउ हियर वी गेट 1 इंचेस. This is our here. Now we get 1 यूनिट. इसको हम देंगे नाम, ये हो गया हमारा BC. अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ओ सी के बीच. अब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है ओ एंड सी के बीच का. तो ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल ऑन ओ सी. अब हम ओ और सी पे एक सेमी सर्कल करेंगे वाइल टेकिंग डी एज अ सेंटर. अब हम डी को क्या लेंगे, सेंटर. हमें मेज़र कहाँ पे करना है, इन दोनों के बीच में करना है. तो हम कंपास से इसको अपने आप हाफ से ज़्यादा खोल के एंड व्हेन वी कैन रोटेट लाइक दिस, हियर इज समथिंग लिटिल बट, तो देन वी कैन राइट हियर एंड कैन, इट्स परफेक्ट. Now here we get, here is a center, ये D. Now this is a mid part. हमें मिल गया D. हमारा सेमी सर्कल जब हमने किया तो हमें मिला हमारा D पॉइंट. ओके, इसको हमने सेंटर को मान लिया D. टेकिंग D एज एन, ये हमारा जो D है ये हमारा सेंटर है. ठीक है, ये जो डायमीटर है एज ए सेंटर ले लिया हमने. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन ओ सी. अब हम इस पे ओ सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन करेंगे. परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से करेंगे, जो हमने पॉइंट बी लिया था उससे करेंगे हम इसका परपेंडिकुलर लाइन. अब जहाँ से हमारी परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट कर रही है, बस सिंपली इसको हम रोटेट कर देंगे डॉटेड लाइन से एंड देन वी गेट पॉइंट एफ. जो हमें पॉइंट एफ मिला है यहाँ से यहाँ तक का, ये है हमारा रूट 9.3 एंड ये हमारा यूनिट 1 का गैप है. ठीक है, नाउ वी गेट अवर, नाउ इट्स कंप्लीटेड. अब हम इसके कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. We all know that construction is make sure or आपको पता है जैसे आपकी प्रैक्टिकल कॉपी होगी उसमें एक साइड हम बनाते हैं दूसरी साइड हम कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. जैसे जो प्लेन शीट पे हमने उसको बना लिया. नाउ हियर इट इज लाइक दिस एंड देन ये बन गया हमारा प्लेन शीट पे और हम इस तरह का कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स
फर्स्टली हमने क्या किया, मार्क किया आ लाइन सेगमेंट, हम वो लिखेंगे मार्क अ लाइन सेगमेंट OB is equals to 9.3 on number line. Further, take BC of 1 unit. और फिर हमारा आता है, हमने क्या किया, हमने मिड पॉइंट फाइंड किया। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने इसको सेमी सर्कल लिया और इसका डायमीटर को हमने एज ए सेंटर मान के कर दिया। तो फाइंड द मिड पॉइंट, हम फाइंड करेंगे इसका मिड पॉइंट D ऑफ OC एंड ड्रॉ ऑफ सेमी सर्कल। क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर देंगे एक सेमी सर्कल ऑन OC, इस पे OC पे, while taking D एज इट इज सेंटर। D को क्या लिया हमने, उसका एक सेंटर लेके उसको बना दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OC, perpendicular line OC passing through points कौन से पॉइंट से, जो कि हमारी पास करेगी पॉइंट B and let it and take B as a center, take B as a center and B as a radius and B F as a radius एंड हमारा जो BF है वो हमारा एक रेडियस आ जाएगा। ड्रॉ एन आर्क, हम उस पर एक आर्क बनाएंगे इन इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन, जो कि हमारा इंटरसेक्टिंग बनेगी नंबर लाइन एट F। BF इज हमारा आ गया √9.3 एंड नाउ द हमारी कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हमारे ये हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जाम्स में आते हैं हमारे क्वेश्चन ऐसे, और हमारे कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स अगर हम नहीं लिखते तो वी नेवर गेट द फुल मार्क्स। ओके, नाउ वी कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Here is, I think you can write it is really visible. Okay, I will कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स एक बार रीड आउट करो। मार्क अ लाइन सेगमेंट करना है हमें OB एज इन अ नंबर लाइन। फर्दर टेक करने BC 1 पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है OC एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन, हम इसके फिर सेमी सर्कल बना देंगे एज इट सेंटर, जो कि उसका हमारा सेंटर बनेगा। एंड ड्रॉ करने परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू करेगी हमारे इनसे, जो हमारी पास करती जाएगी। Points take as B as a center and BF as a radius. Draw an arc it intersecting number line at F. BF is in a √9.3. Now here we have to get our construction points. Now we have question number 5.
जिसमें क्या है, रैशनलाइज करना है हमें डेनोमिनेटर द फॉलोइंग। आई थिंक इट इज हो गया होगा ये सबका। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें रैशनलाइज करना है सबको। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। हमको पता है जब हम रैशनलाइज करते हैं डेनोमिनेटर को, तो जो हमारा डेनोमिनेटर होता है उसी को हम सेम ऊपर डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर दें। जैसे हमारे पास है 1/√7, तो आपका √7 है, √7 को सेम डिजिट √7 डाउन √7, आप इसको क्या करेंगे, √7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई में √7 वी गेट √7, √7 मल्टीप्लाई में √7 वी गेट 7. So here we get our answer. It is really so easy. Now here question number 2. Question number 2 is 1 में √7 minus √6. अब हमको पता है ये √7 है एंड √6 है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब रैशनलाइज करेंगे देन वी गेट द चेंज द साइन हेयर, √7 minus √6, इसका डेनोमिनेटर क्या करेंगे तो √7 plus √6 एंड √7 minus √7 plus √6, sorry by mistake, okay, √7 plus √6 and √7 square minus √6 square. Now the question is arise, how can we write this? तो simple है, here we apply the identity is a plus b, a minus b, a square minus b square. It's simple. Then we can simplify this. √7 plus √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6. Now we get √7 plus √6 upon 1. Now we get √7 plus √6. ये हमारा आंसर. Now we have question number 3. अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास 1 में √5 plus √2, देन √5 plus √2 मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, एज यूजुअल वी चेंज द साइन, √5 minus √2, √5 minus √2. अब क्या 1 को √5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, √5 minus √2, √5 स्क्वायर minus √2 स्क्वायर, √5 minus √2, 5 minus 2. Now we get √5 minus √2 upon में 3. Here we get the solution. Okay, I hope it's visible for all. It's really nice. Now we get solve the question number 4. We have question number 4. 1 में √7 minus 2. 1 में √7 minus 2 मल्टीप्लाई में √7 plus 2 अपॉन में √7 plus 2, √7 plus 2, √7 स्क्वायर minus 2 स्क्वायर, √7 plus 2, 7 minus 2, √7 plus 2, 5 1 minus 2, √7 एंड ये हमारा क्या था 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 minus 4 3. ये दिस इज आंसर. Now we completed today our exercise 1.5.
I hope it's really nice for you. Thank you. Let's get share and subscribe. I hope शायद आपके फ्रेंड्स के कुछ काम आ सके. So please, thank you.